Good morning, students. Today I am going to describe your next grammar topic of your English grammar book, Total English of ninth grade. Let's have a look on your next topic, chapter number 2, articles. You're already very familiar with the articles, but we have to take a look on that topic. There are three articles in English: a, an, and the. They are called articles as they have significant role as parts of speech. They are also called determiners as they affect the meaning of noun. Yes, mostly you have to use the articles according to that, but these are also called determiners because when you use the a and the विद द इफेक्ट ऑफ नाउन, ठीक है, जब आप नाउन के साथ किसी चीज़ को आर्टिकल को यूज़ करते हो या डिटर्मिनर्स को यूज़ करते हो देन दे हैव टू कॉल डिटर्मिनर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. नाउ वी आर डिवाइड द आर्टिकल्स इनटू टू parts: defined article, indefined article. Defined article is the, indefined articles is a or an. A and an are called indefined articles because they are used when we do not speak of any particular person or thing. Yes, I already told you this thing. A or an are indefined articles. दे आर यूज्ड व्हेन वी डोंट स्पीक. जब हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात नहीं करनी है तब हम ए और एन यूज़ करते हैं. ही बॉट अ शर्ट. The is known as a defined article. It is used when we refer to a particular person or thing. ठीक है, दा हमने कब यूज़ करना है? when we refer the particular person or thing, तब हमने दा यूज़ करना है. For example, he is wearing the shirt which he bought yesterday. उसने कौन सी शर्ट पहनी है? जो उसने कल खरीदी थी. क्लियर? This is the main point about the articles. A or an didn't use for the particular person or thing, and the is used for the particular person or thing. That's why they are called indefined article and defined article. Let's begin with indefined articles. Indefined articles is a and an. A is used before the consonants, an is before words beginning with the vowel. I already told you so many times in the class. A we are used before the consonants and an is used before the vowels. Also the sound is vowel. Not only you have to watch the a, e, I, o, u, even you have to check the sound of vowel, then you have to place the an. This is the same thing which we continue next. A box, a pen, a line, an aunt, an eye, an orange, an umbrella, an interesting book. If the first letter of word is a silent, clear, if the first letter of a word is silent H, it is treated as a vowel for this purpose. An or, an R, एन एयर, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट मैन. ठीक है बच्चा, यहाँ पे एच जो है वो वोवल नहीं है, वो कॉन्स्टेंट है, बट हमारी जो साउंड कौन सी है वो वोवल है. अ, आ, ई, ऊ. ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है हिंदी के स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, तो आपने इनकी साउंड्स को चेक करना है. साउंड चेक करने के बाद ही आपने एन को प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू वोवल साउंड. सम वर्ड्स बिगन विद ए vowel but and pronounced as if they are begun with y and are therefore preceded by a. clear? for example university. ठीक है, अभी यहाँ पे u क्या है? vowel है, बट हमने क्या प्लेस किया है? a, क्योंकि जो साउंड है वो य की आ रही है, अ ई की नहीं आ रही है. सेम यूरोपियन यूजफुल. ठीक है बच्चे, दिस इज आल्सो सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द आर्टिकल्स. यू हैव टू चेक द साउंड ऑफ द वोवल्स एंड ऑफ द कॉन्सोनेंट्स. क्लियर? हेयर इज अ consonant but the sound is vowel. Here is the vowel but the sound is consonant, so we place here and here place we a university, a European, a useful hint. Here is a small table which they have to told about the again use of a before consonants, a before vowels according to the sound u and v. ठीक है, a box, a book, a kite, child, a chair, a kite, a rat, a teacher, a tiger. A European, a utensil, a university, a geology, a unique book, a 1 rupee note, a one-eyed man, a one-day match. Next, continue with the use of an before vowel sound.
an ass, an act, an apple, an inkpot, an orange, an order, an eye, an umbrella. ठीक है. Next, this is the sound of कॉन्सोनेंट. एंड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंडिंग एज अ वोवल. जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, साउंड किसकी है? वोवल. एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ईयर, एन एम ए, एन एम एस सी. ए की साउंड आ रही है छोटी ए. एन एम पी, एन एम एल ए, एन एस डी ओ, एन सी सी. Clear? There are some or more points which you have to use the indefined articles. Just have a look on these rules. When we refer to a single countable noun in journal, that is when we are not referring to something or someone specific, और when the reader does not know which one is referred to. Clear? जब हम इसमें countable noun को लेंगे as a single, but we don't know which you have to refer. He gave a parcel for you this morning. A friend of yours called on you. इन द सेंस ऑफ वन. ऑब्वियस आपको वन सेंस की क्लियर हो रही है तो वहाँ पे आप ए प्लेस करोगे. आई बॉट अ न्यू हाउस. आई एट एन ऑरेंज आफ्टर लंच. क्लियर? वी यूज़ वन इंस्टेड ऑफ ए. जी मैं आपको बताया हुआ है कि आप काफ़ी टाइम मैनी टाइम्स आप वन की जगह ए यूज़ कर सकते हो. व्हेन वी विश टू ड्रॉ द अटेंशन टू फैक्ट देयर इज़ ओनली वन. आई हैव वन शर्ट. आपने वन कब यूज़ करना है? जब आपको पता है कि आपके पास वो पर्टिकुलर चीज़ वन ही है, उससे ज़्यादा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वन शर्ट नॉट टू. with the meaning each. Yes, when you have to use the meaning each, then again this is a singular person countable, that so you have to place a. I read at least one book a month. My salary has increased by 5,000 a month. When we refer to the names of the occupations, जब आप किसी occupations को present करोगे तब भी आप according to sound, vowel and consonants you can place an or a. She wants to become an astronaut. My father is a doctor. In a general sense, with a single countable noun that names an example of a class of things, an elephant is a useful animal. ठीक है, single countable noun है as an example of class thing. Clear? A cold drink on a hot day is always welcome. In exclamations before singular countable nouns, when you have to use the singular countable nouns before the exclamation sign of exclamation, then you have to use a. What a lovely dress! Exclamation. Such a shame! Exclamation. In expressions of speed, price and ratio, the bus fare is 20 a person. The bus traveled at 40 kilometers an hour. With certain numerical expressions, a dozen पेंसिल्स. ठीक है, जब आपके पास सर्टन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आएंगे तब भी आपने बेटा ध्यान से ही उसको प्रेजेंट करना है, नोट द. अ डजन पेंसिल्स, 1,000 ईयर्स, $1 million, अ कपल ऑफ gods. Clear? And the last point is when we refer to a person whose name we use with a title is unknown to us. ठीक है, when we use a name of the person as a title, a Mr. Gupta wishes to speak to you. A Dr. John has applied for the post. Clear? Next you have to come on the defined article. Defined article, as I told you, the is a defined article when the noun is known to the reader or the listener, then we have to use defined article. The shirt I am wearing was gifted by my cousin. Clear beta? As I told you, when we talk about a particular person or particular thing, then we have to always use the. ठीक है, वो the किसके बारे में बता रहा है? शर्ट के बारे में बता रहा है. किसने उसको गिफ्ट किया? उसके कज़न ने. So I am wearing tell us about the shirt referred. When there is only one in extents, the sun has risen high. How many suns are there? Only one na. So this is a particular thing which you have to use with the. The sea covers a large part of the earth. Sea, how many seas are there? Only one. So you have to put again, you have to use with the only a particular thing. One is extenses. Then the reader or the listener knows which one is referred to. Give me the book. The book we are talking about which you borrowed. ठीक है, जब आप किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हो तब भी आपने इसमें दा यूज़ करना है. इस लाइन का भी सेम मीनिंग है. When the reader and the listener knows which one is referred to. Give me the book. कौन सी बुक? जो मैंने आपको दी थी. The office close at 6. ठीक है, हम ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं जो at 6 पे बंद हो जाएगा. Before adjectives और participles टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पीपल. ठीक है, आपने एडजेक्टिव और पार्टिसिपल के आगे क्लास को प्रेजेंट करना है. दिस स्कीम इज मीन फॉर द पुअर. कौन सी स्कीम आपकी किस पर्सन के लिए चल रही है?
ठीक है, पुअर के लिए. दैट इज दैट एरिया इज इनहेबिटेड बाय द रिच. बिफोर ओशियन, सीज, रिवर्स, डेजर्ट. यस, दिस थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू. बिफोर द ओशियंस, सीज, रिवर्स, जब भी आप किसी चीज़ का नेम लोगे तो आपने उसके आगे द ही प्रेजेंट करना है. द अटलांटिक, द बे ऑफ बंगाल, द थार एंड द गंगा. When the name of a country consists of an adjective, a noun, and defined article is required useless. The adjective is north, south, east, west, upper, lower, great, greater, or a noun. Clear? Any kind of country which you are consisted as a particular thing, then you have to take the United Kingdom, the United Republic, the United States of America. But North Korea, Upper Volta, Great Britain, New Zealand, 3 countries of with one word names that take off a defined article. Clear? 3 words when we have to use a one word names, then we have to use the defined article. The Lebanon, the Congo, the Netherlands, not also the North Pole, the South Pole. Clear? When we refer to names of hotels, cinemas, theaters and ships, that's this thing I also told you in the class. When you have to take a name of any hotels, cinemas, rivers, theater, ship, then you have to use the. He usually stays at the Taj Hotel. They went to the PVR last night to see a movie. Vasco da Gama rounded the Cape of Good Hope and ventured into the Indian Ocean. I hope you have to clear. Next page, before ordinal numbers which makes the noun defined. ठीक है, आपने वो ordinal numbers यूज़ करने हैं जो आपको defined nouns के बारे में बताते हैं. Then you have to use the. For example, the first thing we must add to the recipe is. क्लियर बेटा? ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 21st, 22nd. ठीक है, इस तरह के ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं. द फर्स्ट थिंग वी मस्ट ऐड टू द रेसिपी इज फ्लोर. द सेकंड समिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन December. देन ऑर्डिनल्स बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स यू हैव टू यूज द with superlative adjectives which makes a noun defined. Yes, I already told you there are 3 degrees of adjective: positive, comparative and superlative. जो superlative डिग्री होती है उसमें हमेशा हम the यूज़ करते हैं. the is the superlative degree used by them. Of all the girls in the competition, she is the most beautiful. आपको पता है जो हम थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं हम उस थर्ड डिग्री में the यूज़ करते हैं. the largest. Clear? The most beautiful, like that. He gave me the latest phone. When the word most is used in the sense of very and majority, it is not a superlative and does not require defined article. हाँ जी, जब आप most को very और majority में यूज़ करते हो तब the नहीं आता, लेकिन आप जब most को बहुत ज़्यादा quantity में यूज़ करते हो like adjective noun defined के तौर पे यूज़ करते हो तब वहाँ पे the लगता है. I find his story most interesting. I have read most of the articles in this magazine. With adjectives used as nouns, the sick and the lame must be shown mercy. ठीक है, with the adjective used as nouns, adjective के साथ जो nouns की तरह वो use होगा the sick, the lame, the young have to spotted the old. Next and last. Yes, next and last के साथ हम हमेशा the use करते हैं. The next question is the last one in the list. The is omitted when next and the last refer to the period immediately before and after the present. Jen got married last week and Jim is getting married next week. When the singular countable noun represent a whole class of the things. ठीक है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होल क्लास को प्रेजेंट कर रहा है तो आपने द ही यूज़ करना है. द एलिफेंट लिव्स लॉन्गर देन मोस्ट एनिमल्स. द एटॉमिक बॉम्ब वाज इन्वेंटेड इन 1944. with the names of most newspapers and magazines. Yes, the newspapers and magazines, the name of that you have to use the Times of India, the Illustrated Weekly, the Statesman. Before the names of the certain well-known books like holy books are there, Ramayana, Bible, so you have to use the Bible, the Veds, the Quran, the Ramayana, the Mahabharata, the Arabian Nights.
before plural proper nouns such as names of peoples, nations and families. For example, जब आप किसी फैमिली का, किसी नेशंस का नाम लेते हो एज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, प्रॉपर प्लूरल नाउन, देन यू हैव टू यूज द इटालियंस लिव इन इटली, द इंग्लिश are fond of adventure. Not the following, the English but Englishman, the French the Frenchman. Before comparatives in constructions like the more it rains the worse the roads will be. Yes, जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ही ज़्यादा रोड्स ख़राब होंगी. So the more it rains the worse the roads will be. The older he gets the more difficult it is for him to find a क्लियर. सो दीज आर द कंपैरेटिव इंस्ट्रक्शन. जब आप कंपेयर करोगे ना किसी चीज़ को तो तब भी आपने द यूज़ करना है. द मेनली लास्ट पॉइंट इज़ दैट फॉर यू बिफोर सर्टन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, आप किसी टाइम के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हो, देन यू हैव टू यूज़ द इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ऑन द प्रीवियस डे, ऑन द बिफोर डे, and the following day, again after day, previous morning, so on. But the following expression of time do not take in defined article like last week, ठीक है, last month, year, midnight, midday, noon. We have to not use to have the in these instructions. Dear students, these are the main instructions of the about the articles which you have to follow in your grammar. These are most important which you have to learn it. So please revise it and learn the rules of articles. Thank you. Have a nice day.